This is your warm-up activity for this session. We have three questions currently. What is debit and credit account? Number two, we have how many types of accounts increases when debited? And number three, what is credited rule apply on capital? Basically, you have to answer these three questions when you are starting your new lecture. So let's proceed towards the today's lecture. In the last lecture, we have go through that what is debit and credit, and we have learned the rule of debit and credit, and we have to follow the increase and decrease pattern of writing debit and credit. We have learned this, and again in today's class, I want you people to revise it. That asset and expense when increases, this is your up arrow. Whenever asset and expense increases, they are debited. Liability, capital, and revenue, when they are increasing, they are credited. So this is a very important rule when you have to go through for your recording of transaction, or when you have to sum up your data. Now on, after 2 or 3 classes, you people should be capable enough to record your data as per the rule of debit and credit. So I proceed. We have done this rule before. We have learned about the dealer, that DEALER, where first three letters is your drawing, expense, and asset, and the last three letters is liability, equity, and revenue. This is just for the brainstorming. I add up these material also for you people. Then we have done box rule, in which we have the rule of debit and credit. You have to write in your board examination when they ask you to write the rule of debit and credit. Then you have to make this box. First one is nature, then debit and credit, and we have 5 natures of account. Close your you can say palm and open your fingers one by one. We have assets, expense, liability, capital, and revenue. Then you have to apply the rule which we have already learned over here. Assets and expense increases, they are debited. Okay, so assets and expense increases, they are debited. Liability, capital, revenue increases, they are credited. Then we have some empty spaces. Definitely these are your decreases space, credited one. Yes, we have done 5 major of accounts are as follows. We have done this, that this person need to be balanced. Your debit side should be equal to your credit side, but you can see this is your not a balanced picture. Okay, then I proceed towards today's important topic, that we have accounting equation. When I talk about the equation, it means in accounting, the equation shows that it has two sides, the debited side and credited side. Here you can see that this is your right hand side. So your right hand side will be your credited side, and your assets will be at your left hand side, and this will be your debited side. Clear? So when your assets, sum of all the assets should be equal to the liabilities and capital. Clear? So what I told you, that we have to add all our assets. We have discussed assets types. We have 2 types of assets, current assets and fixed assets. We have gone through that current assets, the life of the current assets is within the 1 year. Example of current assets: cash, bank, account receivable, stock. These are all your current assets. If I talk about the fixed assets, the life of the fixed assets is more than 1 year. And examples are furniture, machinery, vehicle, your you can say any equipment which you are not purchasing on daily basis, which has a life more than a year. Now we have this right hand side data. On right hand side we have credited data. Liabilities when increases, they are credited. Capital when increases, they are credited. And assets when increases, they are debited. So they are written over here as per their rules. Liabilities includes all your payables, जिन तमाम expenses के लफ्ज के साथ, जैसे salaries है, rent है, advertising bill है, इन ये तमाम जितने टर्मिनोलॉजीज हैं, जब इनके साथ हमारे पास वर्ड पेएबल आता है या ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ये वोकैबुलरी नजर आती है. जैसे सैलरीज पेएबल, एडवर्टाइजिंग पेएबल, रेंट पेएबल, फीस ड्यू.
तो ये तमाम जितने भी हमारे कंटेंट्स हैं ये सब लाइबिलिटी में पोस्ट किए जाते हैं. वी हैव टॉक अबाउट कैपिटल ओवर हियर. कैपिटल को हम एक और टर्म से भी डिनोटिफाई करते हैं, वो है इक्विटी. EQUITY सिंगुलर. ठीक है, जब EQUITY होगा, सिर्फ सिंगुलर है, y है, तो कैपिटल की बात हो रही है. और जब मैं इक्विटीज कहूंगी, TIES, इसका मतलब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है. ठीक है, when I use the word singular, it means equity is just your capital, and when I use the word equities, it means liability plus capital. तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं assets is equals to equities भी लिख सकती थी. क्लियर, प्लूरल भी लिख सकती थी. इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, यू मस्ट नो द शिफ्टिंग ऑफ द प्लेसेस, कि अगर हमें बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, योर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. दिस इज योर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन. अब इसी इक्वेशन में से हो सकता है मुझे कैपिटल मालूम करना हो या मुझे लायबिलिटीज मालूम करनी हो, तो उसके लिए हम उसकी ड्राइव्ड इक्वेशंस फॉर्म करते हैं. और वो ड्राइव इक्वेशंस क्या है बेटे हमारे पास? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज. हमने ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी है. जब आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है तो उसको आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और फिर एसेट माइनस लाइबिलिटीज. वी हैव डन दिस. ठीक है, सिंपल. यू हैव डन दिस इन मैथमेटिक्स. शिफ्टिंग ऑफ प्लेसेस इज वेरी इजी, एंड देन यू पुट द you can say this sign also. The sign will also be changed. Clear? Here your the sign asset minus liabilities. Another one, liabilities. If I talk about the liabilities, I want to find liabilities, then asset minus capital is your liabilities. These two are, that means capital formula and liabilities formula. These are called your drive formulas, and this one is your basic formula. If I ask you to write it down, accounting equation. So for the equation, you have to write assets equals to liability plus capital. Assets is equal to equities. Clear? Then I proceed towards this formula. Here we have accounting equation formula. They have mentioned total assets equals total liability plus equity. You can write the word instead capital, you can write the word equity. This is the word Y singular over here. When I put the word assets, it means total assets, current assets plus fixed assets. Both the assets are present over here. When I talk about the liabilities, तो उसमें current liability भी मौजूद है और long term भी है. और जब मैं equity की बात कर रही हूँ तो हमारे पास equity, total equity of the partnership business या company formed यहाँ पे है. ठीक है? These are your definitions of assets, liabilities, and equity. Assets reflect the total value of the property that the business has. ठीक है, हमने इनकी definitions को पहले हम लोग discuss कर चुके हैं, but again for this is the topic which we have started today, a new one. So asset reflect करता है total property business की, जो कि business में मौजूद होती है, that the business have, and which is in the turnover. Like definitely it will be bring you some profitable sort of data. In other words, it is what it owes. जो भी आपके अपने पास होता है वो आपके सारे assets होते हैं जो business के अंदर इस पर currently मौजूद है. Liabilities reflect the size of the financing of an organization's assets by third party. Basically, yesterday I discussed you that whenever we have importer and exporter, for the importer and exporter we have third party. Bank is your guarantor. Bank is the third party which is giving you the surety or the guarantee that importer पैसे पे कर देगा या एक्सपोर्टर भी पैसे पे कर देगा. तो हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं अक्सर हमारे घर के बिल्स या हमारी जितनी यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ये सारे बिल्स हम बैंक में पे कर रहे होते हैं. ठीक है, सो बैंक में जो हमारी पेमेंट होती है, बैंक आपकी पेमेंट आपसे रिसीव करता है एंड योर बिल्स आर पेड. बेसिकली यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक. बैंक से हम लोन ले भी सकते हैं. ठीक है, और वहां पे अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ भी कर सकते हैं थ्रू द बैंक. इट इज बेसिकली अ थर्ड पार्टी व्हिच इज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. देन वी हैव प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दिस इज व्हाट द कंपनी ओज. हियर यू कैन सी द टू वर्ड. इसका मतलब होता है OWES उधार, OWNS जो आपके पैसे अपने पास होते हैं. Equity, owner's equity characterize the value of investment made in this organization.
यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इक्विटी के लिए वो इन्वेस्टमेंट का वर्ड है बाय इट्स ओनर और शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का वर्ड आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। शेयर होल्डर्स बेसिकली हमारे पास कंपनी में जितने भी ओनर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। व्हेनेवर वी हैव कंपनी, तो आगे जाके अभी हम इसको प्रोसीड करेंगे कि कंपनी क्या होती है, बट व्हेनेवर वी हैव अ कंपनी, कंपनी के बेटे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे आपके शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। Owner's equity is everything that is left from the asset from paying all the liabilities. So these three definitions are very much necessary to understand for today's lecture. I proceed further. We have a very good picture over here, assets of the firm. The transportation over here, there is a technology usage. These are your equipment. These are your stationery. This is your human resource, you can say. So these all you have the assets of the firm. If they want to pay the liabilities, vendor is the person who is basically from whom we have purchased the asset. Vendor उसे कहते हैं जिससे आपने अपना कोई भी asset खरीदा होता है. So that over here they are paying through bank, so they are paying their liabilities. Equity section is the owner. See, the owner can be the girls also. Where here we have assets is equals to liability plus equity, or you can say asset is equals to liability plus capital. Impact of transaction on equation. This is a picture I have choose for you people to show you that accounting equation having impact on, you can say, rule of debit and credit. Clear? So equity when increases, they are on the creditor side, but liability, no, liabilities also increases. Here there is a little bit difference. Any business transaction has two poles of the impact when they are talking about. So we have different perspective here, should be also the increases value. Yes, then we have balance equation. Assets is equals to liability plus equity. These two should be balanced. देखिए जब भी आप equation का word देख रहे हैं, तो in equation you should learn that your left hand side should be equal to your right hand side. ठीक है? This is your equation definition, the basics of accounting balances and reports on profit and losses. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं बेटे assets की, liabilities की, owner equity की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कैपिटल की जो अमाउंट होती है उसके अंदर आपका प्रॉफिट शामिल होता है या आपका लॉस माइनस होता है. जब भी आप कैपिटल की वैल्यू अपने पास लिखते हैं तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट ऐड होता है और आपका लॉस अगर बिजनेस को हो रहा हो तो वो हम माइनस करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली इक्वेशन शुड बी रिपोर्ट एज अ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब हम बना रहे होते हैं आगे जाके आप पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपने कैश को फर्म के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं, क्या चीज आपने सामान सोल्ड आउट किया है, उस पर आपने क्या क्या एक्सपेंसेस जनरेट किए हैं, और उस जो आपने स्टॉक है उसको जब सोल्ड आउट किया है तो क्या प्रॉफिट या क्या लॉस आपने जनरेट किया है. Of almost all foreign organization, it is for everywhere. Whenever we are doing business, whether it is national or international, we have to follow this is based upon your basic accounting equation. This equation is as follows. When I talk about accounting equation, basically accounting equation proves your balance sheet. जब आफ्टर फ्यू लेक्चर्स जब आप लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की बैलेंस शीट को प्रूफ करती है. बिकॉज इन बैलेंस शीट, जिसका मैं नाम बोल रही हूँ बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है, अगेन योर राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें भी आपकी जो राइट हैंड साइड है वहां पे लायबिलिटीज और कैपिटल जाएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे आपके टोटल एसेट्स होंगे. दैट मींस योर करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स. क्लियर? यस, करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं. कैश, इन्वेंटरी मींस स्टॉक, ऑल योर रिसीवेबल्स, योर प्रीपेड एक्सपेंसेस. वर्ड प्रीपेड का मतलब मैंने आपको बताया था, पेड इन एडवांस. देन यू हैव सम इक्विपमेंट्स. क्लियर? आप लोगों के लेवल पे लायबिलिटीज में सिर्फ पेएबल्स को अभी गो थ्रू कर लीजिएगा, deferred revenue को भी रहने दें, but you have to you must know that liabilities should be your payables, your outstanding, your dues. Okay, if I talk about your equity part, equity is having your revenues, it also affect your drawings. जब भी हम drawings करते हैं अपने capital में से business के
मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स करने से क्या होता है, बिजनेस का जो कैपिटल होता है, बिजनेस के पैसे कम हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। और बाकी ये सारे जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग है, वेजेस हैं, जो भी आपने 2-3 लेक्चर्स में एक्सपेंसेस सुने हैं, वो क्या है, वेजेस हैं। वेजेस किसे कहते हैं, पर मंथ पर डे सैलरी, ठीक है। पर डे सैलरी मीन्स कि अगर मैं आज 2 घंटे काम करूंगी, पर आवर भी हो सकती है, या आज के पूरे दिन काम करूंगी, तो डे वाइज ही मुझे मेरी पेमेंट मिल जाएगी। दिस इज फॉर योर वेजेस। और जब मैं सैलरीज की बात करती हूँ, तो सैलरी होल मंथ की जब पैसे एक साथ मिलते हैं, दिस इज योर सैलरीज। So this is the main difference between salaries and wages. Then we have rent. We have seen the word over here, depreciation. Depreciation कहते हैं कोई भी fixed asset अगर reduced हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है और वो घिस जाए, that will be a depreciation. Then we have advertising expense, some utility expenses, office supplies, कोई stock आपने खरीदना है, that will be your expenses. Basically, you have to learn this equation by heart, and you can, with the passage of time, you people will be capable enough to go through these words, terminologies. Yes, we have assets and then liabilities plus stockholders equity. Again, we have used this word. Equity is your capital. Assets क्या हैं? The definition of assets is economic resources. यानी मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ, मेरी resources is equals to my sources. I use the word my resources is equal to my sources. यहाँ पे RESOURCES and यहाँ पे SOURCES, sources. So economic resources are like, what are those factor, those you are using, and you have your assets, and you are using your assets to fulfill your business liabilities and capital. अब जो भी आपके liabilities हैं, वो definitely आप कहाँ से pay करेंगे, अपने assets के जो cash होंगे उसमें से आपकी liabilities pay होंगी, जो भी उधार होगा। जैसे अगर किसी पर्सन से आपने 10,000 रुपीज लोन लिया है, तो डेफिनेटली आप उसको कहाँ से पे करेंगे, अपने एसेट पे से पे करेंगे। देन अगर आपने ड्राइंग्स करी हैं बिजनेस में से, तो वो आपके कैपिटल में से लेस हो जाएगी। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा जनरेट हुआ है, तो कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा। बट बेसिक इक्वेशन इज योर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. I am repeating this again, just you people to learn it in my class. If I talk about the word liability, the financial obligation or debts of a business. Basically, debts means karza, ठीक है, loan, debts of a business, and then we have stockholder equity. Again, your capital, owner's claim on the business assets of a business. Like this is the part of the owner that he has invested this amount, like 5 lakh into the business to generate profit, and then he is having some assets and then some liabilities. एक businessman है, उसने business के अंदर 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, बट अगेन जब वो 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस वक्त उसके पास बिजनेस के कुछ एसेट्स भी हैं, मतलब कोई फर्नीचर, मशीनरी, कुछ हैवी व्हीकल्स, या मे बी उसकी जो बिल्डिंग हो. These are the assets of the business. And if I talk about the liabilities, maybe he has taken some loans, like rent loan, like salaries he has to pay for the worker. So these are the liabilities of the business. And if I talk about it, he is having some machineries and furniture for the business. So a business comprises on these 3 factors, and then they are subdivided. Clear? Here you can see accounting equation is proves assets is equals to liability plus capital, and here I have used the rule of debit and credit plus accounting equation together. If I talk about assets, it means my furniture is increasing. I purchased the machinery of rupees 50,000, means मैंने machinery खरीदी है ना, तो machinery should be in my asset side और machinery increase होगी. Clear? And whenever your asset is increases, it is debited. And if I lost my machinery, अगर मेरी machinery अब workable condition में नहीं है, या वो मैंने sold out भी maybe कर दी है, तो that will be your decreases. If I talk about your liabilities, अगर मैं मुस्तकिल business के अंदर लोन पे लोन ले रही हूँ, या लोगों की salaries नहीं पे कर रही, या rent मेरे ऊपर अभी तक due है, तो वो लाइबिलिटीज मेरे ऊपर इंक्रीज हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो मेरे ऊपर उधार बढ़ता रहेगा.
So I'm writing it in my credited side. If I talk about the equity part over here, then equities में क्या है? Equities is the same. मेरे पास business का capital increase होता है. Capital increases, it is credited. अगर मेरे पास जब मैंने business start किया था 5 lakh rupees capital था, ठीक है. After 6 months बाद जब मुझे profit generate होता है, मेरा capital 5 lakh से 8 lakh हो जाता है. इसका मतलब मुझे 3 lakh profit generate हुआ है. और जब मैं अपनी वो 8 लाख की अमाउंट लिखूंगी तो क्योंकि मेरा इक्विटी या मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा तो मैं उसको अपने क्रेडिटेड साइड पे लिखूंगी. आई रिपीट, इन द स्टार्ट आई ऑफ माई बिजनेस मेरे पास 5 लाख रुपीज थे जिससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था. आफ्टर 6 मंथ्स मेरे जो बिजनेस का कैपिटल है वो 8 लाख हो जाता है. तो मैं उसको भी क्रेडिटेड साइड पे लिखूंगी क्योंकि मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज कितने से हो रहा है? 3 लाख से. क्लियर? So the 3 lakh will be my profit which I added up in my capital, and then my total capital will become 8 lakh. Clear? Yes, you people have to solve this practice question right now with me in the class. You have to apply the accounting equation here. Kindly open your notebooks and registers so that we can solve these class practice questions right now. You can take the screenshots or you can save this picture for yourself. And we have number 1, assets is 500,000 and we have liabilities unknown. We have liabilities are unknown and capital is 350. So what will be the formula which I used over here? Yes, what will be the formula I'm using over here? Now what you have to do, you have to put the values for using the formula of the liabilities. Liabilities is equals to asset minus capital. I put the formula over here, 500,000 minus 350, and my answer of liability will be, yes, what will be the answer of liability is 150. Clear? So simply you have to put the formula and you have to find these missing figures. Then this is my working. We have to put the formula. Liabilities is equals to asset minus capital. Your assets is 500,000 minus 350,000, and you have to find the missing figure answer. I request you, as you have seen this lecture, then you have to do these 2, 3, 4, these 3 questions, 4 questions you have to do in your registers of accounts for your practicing, and you have to apply the formula like this, then put the values and find the appropriate answer. Clear? So in this way you people will be capable enough to apply the accounting equation very well, because in accounting equation I told you that we have the basic equation, assets is equals to liability plus capital, and then we have drive equations, that is liabilities asset minus capital. Another drive equation we have for the capital, assets minus liabilities. Okay, so these are the drive, and one is the basic, S is equals to liability plus capital is your basic equation. You have to solve in this way. This is your home assignment. You have to, I didn't mention your question number. I will post your homework like today on the group, but first you have to do these questions, then I will post my further queries. But you have to remember that you have to solve the questions in this way. Hope the lecture is very much clear to you and you will be capable enough to solve these questions for your practicing. Thank you for this session.